Hello everyone, my name is Rashi and in this video we'll be ending our exercise 2.4. So only one question is left, that is question number 5. So let's discuss that question also and then we'll be starting our new exercise. So exercise 2.4 question number 5 is again on page number 44 of our NCERT book. And question number 5 says factorize. And first part is x cube minus 2x square minus x plus 2. So if you have watched the previous video, in that video question number 4 we had a expression that was a trinomial expression, but ये एक polynomial है जिसमें 4 terms हैं, right? So इसमें अब middle term splitting नहीं use करेंगे. What we will do is the first step, जब भी हमारे पास 4 terms होती हैं एक expression में, the first step is to see whether anything is common or not. So from all the 4 terms nothing is common because यहाँ पे constant term है 2. So x is also not common from all the 4 terms, right? But from two terms we can take common. इन दोनों में से कुछ common ले सकते हैं और इन दोनों में से कुछ common ले सकते हैं. But अगर common लेके भी bracket same नहीं आता, so we have one more step to to factorize these expressions, that is hit and trial. Hit and trial method. हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हमें ना कांस्टेंट टर्म विच इज 2 हियर, यहाँ पे पॉजिटिव 2 प्लस 2 है कांस्टेंट टर्म, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म हमें निकालने होते हैं, दैट इज प्लस 2. तो प्लस 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, राइट? सो उन फैक्टर्स को इस पॉलिनोमियल में हम पुट करके चेक करेंगे जीरो किस फैक्टर में आ रहा है, और जिस भी नंबर में जीरो आएगा दैट नंबर वुड बी द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. फिर हम उसको लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करेंगे एंड द रेस्ट 2 फैक्टर्स हम कैलकुलेट करेंगे, राइट? पर उससे भी ज़्यादा इजी जो मैंने बताया था रीग्रुपिंग दी टर्म्स, बिकॉज यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 3 टर्म्स होती है, उसको हम 4 बनाते हैं देन भी रीग्रुप. यहाँ पे ऑलरेडी 4 हैं, सो हम रीग्रुपिंग से इसका आंसर निकाल सकते हैं. कैसे? फ्रॉम दी फर्स्ट 2 टर्म्स व्हाट इज कॉमन? एक्स क्यूब यहाँ पे है एंड माइनस 2 एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, सो एक्स स्क्वायर इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट? एक्स माइनस 2. यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2 है, इट मीन्स दिस इज द ऑपोजिट. यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2 है, मीन्स माइनस 1 कॉमन. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ x minus 2. So x minus 2 common. Now we are left with x square minus 1. अब x square minus 1 can further be solved because यहाँ पे अभी भी 2 factors आए हैं, but we know that expression में जो भी highest power होती है उतने factors होते हैं. Means in this expression we have x cube highest power cube है, means 3 factors आएंगे. अभी तो 2 ही आए हैं और यहाँ पे x square minus 1 है which can be written as x minus 2 as it is a square minus b square. 1 को हम 1 square भी लिख सकते हैं, so a square minus b square we know that a plus b, a minus b, x plus 1, x minus 1 and x minus 2 तो यहाँ पे है ही. So now these are the 3 factors of this expression. But ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम आ जाएगा. So this method will not be applicable. We will be doing this part again by hit and trial method. So first note down this, then we will be starting with hit and trial method, same part number 1.
So hit and try method. So by hit and try method, we know that factors of constant term are means constant term 2 किस किस की टेबल में आ सकती है. So it can be in the table of plus minus 1 and plus minus 2. Right? So plus 1 minus 1 plus 2 minus 2. Now we will check कि 0 इनमें से किसको पुट करने पे 0 आता है. तो first we will let px equals to x cube minus 2x square minus x plus 2. So px equals to this expression. Now p of 1. पहले हम x की प्लेस पे 1 पुट करते हैं, positive 1. Then अगर यहाँ से 0 नहीं आता then we will put negative 1. So positive 1 अगर हम पुट करेंगे in the place of x, what we'll get? This will be 1 cube minus 2 as it is, 1 square minus as it is 1 plus 2. So this is 1 cube which is 1 only. This is 1 square again 1 and 1 into minus 2 is minus 2 minus 1 plus 2. Positive 1 negative 1 cut. Positive 2 negative 2 cut. So answer is 0, which means that 1 is the factor of this expression. Or else what we can say, therefore x minus 1 is the factor of px. Now why x minus 1? Because p of 1 से 0 आ रहा है, it means हम opposite sign यहाँ पे put करते हैं. p of 1 positive 1 से 0 आ रहा है, it means x minus 1 is the factor of this. Because जब हम x minus 1 को equal to 0 करेंगे तो x की value तो 1 ही आएगी, वो value हम put करेंगे इसमें, we'll get 0. Right? So जब भी हमारे पास एक value given होती है जिससे 0 आ रहा है, it means उसका opposite sign होगा उसका factor. x minus 1 is the factor of px. So now our next step is to long divide x minus 1 से. अब हम divide करेंगे polynomial को x cube minus 2x square minus x plus 2. Right? So long division के बाद जो हमारा question आएगा उससे हम बाकी के दो फैक्टर्स निकालेंगे. वन फैक्टर इज दिस x माइनस 1 एंड द रेस्ट टू फैक्टर्स हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. सो x यहाँ पे x क्यूब है, मीन्स दैट वी वांट x स्क्वायर एक बार और चाहिए, सो दैट x स्क्वायर इंटू एक्स हो गया x क्यूब एंड माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वी हैव टू चेंज द साइन इन दिस स्टेप. ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया. So इससे ये वाला first term is 0 and now we have minus 2x square plus x square. So plus minus is minus x square and sign big digit का, so minus का. ठीक है. अब ये दोनों as it is carry forward. Right? Now x है यहाँ पे है minus x square means minus of x. x into minus x is minus x square plus x. Again sign change. तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव. ये तो कट हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x एंड साइन नेगेटिव प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड. नाउ x एंड माइनस 2x मीन्स माइनस 2 और चाहिए टू मेक दिस माइनस 2x एंड दिस विल बी प्लस 2. अब फिर से साइन चेंज, दिस इज नेगेटिव सो पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव सो नेगेटिव, दोनों का आंसर इज 0 और वी कैन से रिमाइंडर इज 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. ये जो क्वेश्चन आया है, इधर से हम बाकी के दो फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे. कैसे? बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है. वन फैक्टर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, द रेस्ट विल कैलकुलेट बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग.
let's solve this question. है तो यहाँ पे अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू मिडिल टर्म स्प्लिट माइनस ऑफ एक्स. और माइनस ऑफ एक्स को हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे कि माइनस करके तो -1x आए और मल्टीप्लाई करके आए 2 इंटू 1 2. ठीक है. सो 2 के फैक्टर्स तो 1 इंटू 2 ही होंगे और 2 माइनस 1 1 भी होता है. 1 चाहिए माइनस करके 2 माइनस 1 1 भी होता है. इट मीन्स दिस विल बी 2x माइनस एक्स. 2x माइनस एक्स इज x बट हमें चाहिए नेगेटिव ऑफ x विच मीन्स बिग नंबर के साथ हम नेगेटिव लगा देंगे. सो नाउ वील गेट प्लस माइनस माइनस x एंड साइन नेगेटिव. सो ये x जो है ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया -2x प्लस x में बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज. नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम these two terms and then these two terms. So यहाँ से x कॉमन है, we'll be getting x minus 2. यहाँ पे ऑलरेडी x minus 2 है, so 1 कॉमन लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे कॉमन. x minus 2. So x minus 2 x plus 1. ये दोनों और फैक्टर्स आ गए अदर देन फ्रॉम दिस. मतलब 3 फैक्टर्स होंगे. ये तो क्लियर है बिकॉज एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 3 है. ठीक है. सो 1 फैक्टर हमने निकाल लिया, बाकी के दोनों इधर से आ गए. सो ऑल द 3 फैक्टर्स वुड बी x minus 1 x plus 1 एंड x minus 2. और यही तीनों फैक्टर्स उस वाले मेथड से भी आए थे विच वॉज ईजी मेथड. बट क्या होता है कि इन एवरी क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज कभी कभी उनके ब्रैकेट सिमिलर नहीं आते. सो देन वी ट्राई हिट एंड ट्रायल मेथड. So in hit and trial method, first we write the factors of constant term which is 2. So 2 के factors होंगे plus minus 1 and plus minus 2. So अब हम put करके check करेंगे कि 0 किस में आ रहा है. जैसे हमने 1 put किया उसी में 0 आ गया. अगर नहीं आता then we have to put the next number which is minus 1. अगर उससे भी नहीं आता then next number which is plus 2. ठीक है. So किसी ना किसी से 0 आएगा. फिर जब 0 आ गया so it means 1 जो है वो इस नंबर का फैक्टर है विच उसके बाद हमने 1 के ऑपोजिट साइन को x माइनस 1 को फैक्टर लिखा px का. ठीक है. बिकॉज जब x माइनस 1 फैक्टर है जब भी तो x की वैल्यू 1 आएगी, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड वील गेट 0. राइट. सो उसको ऑपोजिट साइन हम यहाँ पे लिखते हैं. देन वी लॉन्ग डिवाइड दैट x माइनस 1 को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को. राइट. फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उससे हम द रेस्ट 2 फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट जो भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे. 3 है इट मीन्स 3 फैक्टर्स होंगे. 2 होता है इट मीन्स 2 फैक्टर्स होते. 4 होता है इट मीन्स 4 फैक्टर्स होंगे. राइट. प्लीज नोट डाउन दिस मेथड सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट.
Now let's start with second part. Second part of question number 5 is x cube minus 3x square yes, x cube minus 3x square minus 9x minus 5, right? So again we have four terms. पहले हम फर्स्ट मेथड से ट्राई करते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम टू टर्म्स, ठीक है? सो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है, वी आर लेफ्ट विद एक्स माइनस 3 एंड फ्रॉम हेयर चिल्ड्रन 9x minus 5 नथिंग इज कॉमन, -1 कॉमन है बस, सो वी आर लेफ्ट विद 9x plus 5, ठीक है? सो नाउ सी द ब्रैकेट्स आर नॉट सेम, ठीक है? इसी वजह से वी ऑलवेज गो फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड इन दीज क्वेश्चंस, ठीक है? सो इससे अब ये सॉल्व नहीं होगा, इट मीन्स अब हम हिट एंड ट्राई पे आते हैं. सो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, which are, देखो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे -5, राइट? सो फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस 1 तो हो गई एंड प्लस माइनस 5 भी होगा, राइट? बिकॉज अब 5 है, 5 किस किस की टेबल में आ सकते हैं? 1 and 5, ठीक है? 2 3 4 6 7 8 नहीं, so plus minus 1 and plus minus 5. Now our next step is to let px equals to x cube minus 3x square minus 9x minus 5, ठीक है? px को हमने equals to this polynomial let कर लिया. Now first let's put 1, p of 1, पहले हम 1 put करके चेक करते हैं. So what we will get? In the place of x हमें 1 put करना है. So 1 cube minus 3 1 square minus 9 1 minus 5. So 1 cube is 1, 1 square is 1, so minus 3 minus 9 minus 5. So this is minus minus plus 12 and sign negative. 1 minus 12 minus 5. Minus minus plus 17 and sign negative. So this will be minus 16, which is not equals to 0. हमें तो 0 चाहिए, so it means p of 1 से तो बात नहीं बनी. Our next step would be next factor को हम चेक करें, that is minus 1. अब हम p of minus 1 चेक करते हैं, because इससे तो 0 नहीं आया. Now p of minus 1 means in the place of x, now we will put minus 1, x cube, so minus 1 cube minus 3 as it is, x square minus 1 square minus 9 as it is, x की प्लेस पे minus 1 minus 5, ठीक है? So minus 1 cube, minus 1 into minus 1 into minus 1, minus से minus cut, but again minus is left. So minus 1 square would be minus 1 into minus 1, so plus 1. So ये हो जाएगा -3, this will be +9, this will be -5. So see, minus 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 वाले सारे एक साथ प्लस कर लेते हैं. 5 6 7 8 9, -9 plus 9, -9 plus 9 is ultimately
0, which means that p of -1 से हमारे पास 0 आ गया. Yes, so from p of -1 we have 0 here. So what does this mean? This means that p of -1 0 आ गया. It means x plus 1 is the factor of px. I told you हमेशा ऑपोजिट साइन हम यहाँ पे लिखेंगे. इफ -1 इज द फैक्टर, इट मीन्स जब x plus 1 को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जब हम x plus 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तभी तो x की वैल्यू -1 आएगी, जो हम फिर यहाँ पे पुट करेंगे एंड विल गेट 0, राइट. तो यहाँ पे हमेशा इससे ऑपोजिट साइन हमको नोट डाउन करना है. सो इट मीन्स x plus 1 इज द फैक्टर ऑफ px. मतलब अब हम हिट एंड ट्राई में लॉन्ग डिवाइड जब करेंगे इस पॉलिनोमियल को, विल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x plus 1. सो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग. x plus 1 से डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल x³ - 3x² - 9x - 5. Also children, in this polynomial also we'll get 3 factors because highest power है cube, and one factor already आ चुका है which is x plus 1, which means the rest 2 factors we have to calculate now. So for that हम x plus 1 से डिवाइड करते हैं इस polynomial को. So firstly x है यहाँ पे x³ है, means अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा. सो दैट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे विल गेट x³. देन एक्स स्क्वायर इंटू +1 करेंगे विल गेट एक्स स्क्वायर. साइन चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. सो फर्स्ट टर्म तो 0. नाउ सेकेंड टर्म में वी हैव -3x² - x². -3 - x माइनस प्लस 4x² एंड साइन नेगेटिव, एंड बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड. नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे x है, यहाँ पे है -4x², विच मीन्स हमें और क्या चाहिए, -4x. to make this -4x² and this will be -4x, right. Now our next step is to change the sign so that first term 0 हो जाए. Second term में we have -9x plus 4x, so plus minus minus 5x and sign negative, and this -5 as it is carry forward. Now lastly यहाँ पे x है, यहाँ पे -5x है, so -5 और मल्टीप्लाई करेंगे, so -5x -5, अगेन दोनों साइन चेंज, दोनों 0 एंड आवर रिमाइंडर इज 0. So with this children again हमने यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया. We got our कोफिशिएंट क्वेश्चन which is x² - 4x - 5, जिससे कि अब हम the next 2 factors कैलकुलेट करेंगे by middle term splitting. जो थोड़ा सा लेंदी है बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. once you practice these questions it will be very easy for you to solve them. so अभी इससे हम बाकी के 2 factors निकालते हैं. the first factor is already here x plus 1. so हमें 4x को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और ऐसे करना है कि माइनस करके तो -4x आए उन दोनों को एंड मल्टीप्लाई करके आए 5, बिकॉज 1 into 5 is 5. so 5 के फैक्टर्स 1 into 5, बस यही. so उसमें भी 5 - 1 4 आ ही गया, माइनस करके 4 चाहिए, 5 - 1 4. so it means -4x को हम बाइफिकेट करेंगे 5x minus x which is 4x, but we want -4x. it means ये नेगेटिव साइन हम शिफ्ट कर देते हैं ग्रेटर नंबर पे, तो प्लस माइनस माइनस 4x एंड साइन नेगेटिव, बिकॉज अब हमारे पास ग्रेटर नंबर पे नेगेटिव है. सो इट मीन्स ये हो जाएगा x² एज इट इज -5x plus x - 5, राइट. सो अब हम रीग्रुप करते हैं इन दोनों में से कॉमन एंड देन इन दोनों में से कॉमन. So from these 2 numbers we have x common, x - 5. यहाँ पे already x - 5 है, so +1 x - 5. So x - 5 and x plus 1 are the factors of
this polynomial and one factor इधर से आया था x plus 1, which means that all the three factors of this polynomial are x plus 1, x plus 1 and x minus 5. These are the three factors of this polynomial. Yes, x plus 1, x plus 1, x minus 5. Correct. So I hope this second part is clear. इसमें भी हमने hit and trial method use किया. First factors of constant term, then उन factors को put करके zero किस factor में आ रहा है, then उससे हम एक factor निकालेंगे, then फिर long divide and जो भी हमारे पास question आएगा उससे the rest two factors आ जाएंगे. And हमें कैसे पता चलेगा three factors हैं, because the highest part of this polynomial is 3. Correct? Please note down this second part of question number 5. So this was the second part of question number 5, and the rest two parts will be starting in our next video. So stay tuned for my next video, and till then practice these type of questions from your extra book so that this concept is more clear to you. Thank you.